I would give a very quick now, a quick comparison of traditional education system and OBE system. So in traditional education system, usually there is the relative grading and assessment of students. हमारा जो percentage system and all, at the end examination system determines the kind of assessment that you have in your classroom. So in traditional education system, we have relative grading and assessment. On the other hand, in OBE or in outcome-based education, we assess individual standing of students. So when this student entered the class, वो किस जगह पे खड़ा था और अब किस जगह पे, तो ये individual हो जाती है, individualized. इसका ये मतलब नहीं है कि हमें हर बच्चे को अलग पढ़ाना है. Yes, they are studying in a class. It's a group. You have a lot to do. आपने सबके papers लेने, उनको आपने you have to check their work. You have to check their homework. You have to check their class work. You have to guide them. But then you have to understand each individual is a unique individual. आपकी सक्सेस ये है कि ये बच्चा पहले जब आया था ये इस जगह पे था, तो इस वक्त ये कहाँ पे है. Similarly, traditional education system में we understand कि it's teaching is all about transferring the knowledge through books or through the content that you have decided. But in outcome-based education, it is the transfer of skills and social norms. जो मैं आपसे पूछा था आपकी affective domain, psychomotor domain, cognitive domain अलग से आप कभी भी जब use करते हैं as teachers, so you then only want to have reproduced the content. You're not focusing on personality then, and you're not focusing on their communication skills, their interpersonal skills, their social skills. They all come from the other two domains, which are the affective domain as well as the psychomotor domain. तो आपको combine करके चलना है. आपका जो भी lesson है, that should not just be based on the book. It should have an element of the skills, an element of which is related to their civic sense, to their personality. So it's not only Islamia teacher responsibility to talk about cleanliness. एक maths teacher भी जब आता है, और अगर maths teacher खुद भी बहुत अच्छा dress up हुआ है, can always say, okay, chap, why your hair is not groomed fine? Okay, for example, आप कितने अच्छे लगते हैं अगर आपके बाल बड़े अच्छे groom हुए होते. तो we all keep doing, but conscious effort होनी चाहिए. मैं सिर्फ एक example दिए. Similarly, हम ethics को हमेशा छोड़ देते हैं Islamia teacher पे. No, it's everyone's responsibility. आउटकम बच्चे का तभी आएगा ना, वो जो मैंने आपसे कहा था सिंथेसिस. आप ये साइलो से निकलेंगे, जब आप इन साइलो से निकलेंगे तो तभी वो एक होल क्रिएट होगा ना, जो आपने खुद मुझे बताया कि सिंथेसिस का मतलब ये है कि आप डिफरेंट चीजों को इकट्ठा करके आप एक होल बनाते हैं. ठीक है. What do you see here? Can somebody tell me what do you see here? What shape is it? This hole that you see, what shape is it? Ma'am, oval-like shape. What is it now? What do you see now? It's a flower. So this is the synthesis of shapes. जब मैंने आपसे इसको individually एक part पूछा तो you had different interpretations. अभी जब मैंने पूछा तो everybody said it's a flower because this is the outcome. This is the synthesis. जब आप सिर्फ maths की बात करेंगे, आप सिर्फ इस्लामियत की बात करेंगे, आप सिर्फ language की बात करेंगे, any other subject here, so they all are just the petals. Unfortunately यही होता है in your classrooms most of the time. आपने देखा है कभी कि जब आप एक certain teacher class में जाते हैं तो बच्चों का attitude एकदम से फर्क हो जाता है? कभी नोट किया आपने? वही बच्चे एक certain class को एक certain class में एक certain subject में जब वो बच्चे बैठे होते हैं उनका attitude वो होता ही नहीं है. But the moment it's the same children, when they're addressed by a very different teacher, their attitude changes. या तो वो बहुत trivial हो जाएगा, या बहुत serious हो जाएगा, या बहुत डरा हुआ हो जाएगा, या बहुत ही positive हो जाएगा, and they would be motivated. They just want to learn because they like that teacher. I believe most of you are those kind of teachers. जब आप class में जाएं तो बच्चों के चेहरे पे smile आ जाए. But the point is, आपकी personality, आपकी handling बच्चे की impact करती है बच्चे की affiliation with that subject. I had to work hard last year on my son, who is 12 years old, and he suddenly dropped his interest in a particular subject. And while he was good at that subject,
So I needed to know, and then finally I knew that the teachers changed, and the new teacher was more into, not letting the children speak, and he was more of interactive learner. So I really had to put a lot of effort. And at the end, he started hating the subject. No, I don't want to study this subject. So, just the personality of the teacher, your teaching style can impact the student affiliation with that particular subject. And at the end, outcome क्या आएगा? Let me tell you, outcome उसी क्लास में बेहतर आता है जहाँ पे बच्चे टीचर को पसंद कर रहे होते हैं. और टीचर को पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप जाएं उनसे गप लगाएं, मजाक करें, and that's it, you come back. At the end, वही बच्चे आपको कुछ और नजर से देख रहे होते हैं कि जो उनका टाइम वेस्ट हुआ. एट द एंड उनको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ा. क्लास में तो हर चीज को बहुत इजी हमने किया. एग्जाम के दौरान हमने बहुत सारा उनको सिलेबस दे दिया. आई एम नॉट सेइंग यू गाइस डू इट. आई एम ओनली सेइंग प्लीज अंडरस्टैंड, I have been interacting with thousands of teachers, so I know कि ये चीजें कहीं ना कहीं जरूर हो रही होती हैं. So outcomes भी तो उसी तरह के आएंगे ना, जिस तरह का एटीट्यूड होगा बच्चे का towards that subject. तो जब भी हम silos की बात की थी कि आपके subjects हैं, they make a flower like this, that is a whole. तो मैथ्स के जब आप प्रोजेक्ट्स डिजाइन करें तो आप you need to make sure that you involve other subjects also. Languages and Islamiyat remain such subjects जिनको कोई भी include नहीं करता, and because they're very easy, or they're considered very easy, and that's why unfortunately not very important. तो आप देखेंगे कि इन सब्जेक्ट्स में कितनी ज्यादा पावर है, एंड यू क्रिएट दोज लिंक्स आउटकम बेस्ड एजुकेशन के लिए. सो ब्रेक दो साइलोस, उन साइलोस से बाहर आए, मेक कंप्लीट फ्लावर. और बच्चों को पता हो कि अच्छा यही कॉन्सेप्ट हमें मैथ्स के टीचर ने भी बताया और वही हल्का सा हमें किसी और टीचर ने भी टच अपॉन कर लिया. सो देन यू क्रिएट अ कनेक्शन. आपने वो पढ़ाना नहीं है, आपने सिर्फ एक वर्ड बोलना है, वो क्यों ये चीज जो आपने अपनी उस क्लास में पढ़ी है उसको जरा सोच लीजिएगा. ठीक है, सिर्फ इतना सा ही. उसके लिए जरूरी क्या है, यू शुड नो कि बाकी सब्जेक्ट्स में है क्या. आप जब स्टाफ डिस्कशन में बैठे होते हैं तो आप कभी ये कह सकते हो कि मैं ये सब्जेक्ट, ये मेरा ये कॉन्सेप्ट है, आप में से कोई है जो इस तरह के कॉन्सेप्ट को टच अपॉन कर रहा हो, तो आप सिर्फ इसको थोड़ा रीइंफोर्स कर देना या मेंशन कर देना. सो दिस इज हाउ यू ब्रेक साइलोस, एंड दिस इज हाउ यू हैव शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. So then based on current needs and present needs, in traditional education system, मुझे अभी क्या पढ़ाना है, उस सारी जिंदगी मतलब the whole focus of the teacher is what do I have to cover today, what do I have to cover now, I have to complete this whole book or the syllabus. On the other hand, outcome based education में you link it with the needs of the society, कि हमारी सोसाइटी में किस तरह के लोगों की कमी है जबकि होनी चाहिए नहीं. Like we have to improve that side of the society. हमें लोगों में civic sense for example लेकर आनी है. तो civic sense उसमें लेकर आना वो सिर्फ certain teacher की responsibility नहीं है, हर एक की. Moreover, outcomes का मतलब ये भी है कि आपका बच्चा जब इस सोसाइटी में जाएगा तो वो क्या परफॉर्म करने के काबिल हो सकेगा. So आप फोकस करते हैं कि बच्चे के रिस्पॉन्सेस और उन रिस्पॉन्सेस को कैसे बेहतर बनाया जा सकते हैं. असेसमेंट टाइम फ्रेम आपका फिक्स्ड होता है ट्रेडिशनल सिस्टम में कि बाय मंथलीज हैं, मंथलीज हैं. नो, आउटकम बेस्ड एजुकेशन में इन टाइम फ्रेम्स के साथ साथ आप किसी भी टाइम वो जो आप सडन टेस्ट लेते हैं, आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे होते हैं, वो कंटिन्यू रहती है. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ करिकुलम कंटेंट की जो हमने बात की थी ना कि नॉलेज और स्किल और वो जो तीनों डोमेन्स हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन में साथ साथ चल रहे होते हैं. ट्रेडिशनल सिस्टम में टीचर और स्टूडेंट मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, जबकि आउटकम बेस्ड एजुकेशन में टीचर, स्टूडेंट्स, कम्युनिटी, आपका पेरेंट्स, आपकी ओवरऑल सोसाइटी, आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स, हर चीज के बारे में आप सोच रहे होते हैं कि हमारी सोसाइटी में किस तरह की स्किल्स की ज्यादा जरूरत है, एंड देन यू फोकस ऑन दोस पर्टिकुलर स्किल्स. So these are major differences between traditional education system and outcome based education system.